A very good o'clock to all the students. Here I am Amisha ma'am, your English grammar teacher. Students, yesterday I have started our chapter number 5, that is non-finite form of verbs. Okay, where I have discussed you about infinitives and participle. And today I am going to discuss our last topic, that is the gerunds. Okay, so what gerund is, students do listen it very carefully, that gerund is a verbal noun. Verbal, why I am saying? What is verbal noun? That means it is formed from a verb. Its formation is done from a verb and it does work of a noun. Means it is formed from a verb but is working as a noun. See, like if you could read here the sentences which are given in front of you. First one is I am fond of painting. In Hindi, what is it? मुझे पेंटिंग करना पसंद है. पेंटिंग करना. Similarly, second sentence, smoking is bad for health. Yeah, smoking is injurious for health. Yeah, that means what? In Hindi, what you could calculate it as or determine it as? In Hindi, you could say that धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. तो यहाँ पर पेंटिंग जो वर्ड है स्टूडेंट्स इन फर्स्ट सेंटेंसेस, पेंटिंग करना यानी चित्रकारी करना, और यहाँ पर नेक्स्ट है धूम्रपान करना, स्मोकिंग. दीज टू वर्ड्स जहाँ पर करना वर्ड आ रहा है, दैट मीन्स दे आर योर gerund. यहाँ पर पेंटिंग एंड स्मोकिंग, बोथ दीज वर्ड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड्स पेंट. पेंटिंग इज फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ब पेंट, वेर इज स्मोकिंग इज फॉर्म फ्रॉम द वर्ब स्मोक. स्मोक और पेंट ये दो वर्ब्स हैं जिनसे आपके वर्ड्स बने हैं, पेंटिंग और स्मोकिंग. बट नाउ दीज पेंटिंग एंड स्मोकिंग कांट यू से देम एज वर्ब. You are being told as it as gerund because they are working as a function of noun. कि क्या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? धूम्रपान करना, स्मोकिंग करना. Okay, because they are partly a noun and partly a verb. So therefore these words are called verbal nouns or gerunds. Okay, or you could also say कि इसमें students, if you could see that in first form of the verb you are adding ing also, है ना? So it is being called as gerunds as well. Now uses of gerunds. A gerund is used in following ways. First one is as the subject of a verb. How? The first one is walking is a good exercise. Here walking is our gerund and is used as a subject of the verb. How it is? What is good exercise? Walking. Okay. Walking is a good exercise. So here working it as a subject of the verb. In second one as a object of the verb. That is we like playing outdoor games. What we like? Playing outdoor games. So playing word is your gerund which is working as an object of the verb. As an object of a preposition, the cashier was fined for embezzling money. Here for is our preposition, after that you are using embezzling and embezzling is our gerund. Okay. As a complement of a verb. Complement of a verb means coming at the last of the sentence and working of relating with the verb. What I dislike the most is cheating. So what you dislike? Dislike is your verb. What you dislike the most? Your answer is cheating. It is working here as a complement, coming in the last. Like a verb, it may take an object as well. Indians believe in worshipping nature. What Indians believe in? Worshipping nature. So it may take here as an it may take your object also and behave like a verb as well. In short, prohibitions. Prohibitions means no talking. दैट मीन्स इफ़ यू से नो टॉकिंग, नो स्पिटिंग, हियर आपने देखा भी होगा लिखा हुआ नो स्मिटिंग या नो स्मोकिंग और लगा होता है क्रॉस साइन स्मोक पे, सिगरेट्स पे. तो दैट मीन्स ये शॉर्ट प्रोहिबिशंस के लिए भी यूज़ हो सकते हैं. प्रोहिबिशंस मीन्स व्हेन वी आर सेइंग नो टू समथिंग. आफ्टर सम वर्बल फ्रेजेस सच एज योर नो नॉन, लीव ऑफ, गिव अप, पुट अप, बर्स्ट आउट. ओके, द वुमेन बर्स्ट आउट क्राइंग, ये आपकी वर्बल फ्रेज है. बर्स्ट आउट, इसके बाद भी आप क्या यूज़ कर सकते हैं? जेरंड्स. आफ्टर एक्सप्रेशंस लाइक कांट हियर, स्टैंड, कांट स्टैंड, कांट हेल्प, ये सारे एक्सप्रेशंस के बाद लाइक इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क. लास्ट इज योर gerund also used as simple nouns. Meetings are usually noisy. Here meetings is our simply a noun and here it is also working as a gerund. Hope so gerund is clear to you. Now gerunds and infinitives. The verb can take either a gerund or an infinitive. These verbs what are? Advise, allow, attempt, begin, hate, hear, intend, like, love, notice, prefer, propose, regret, remember, start, try, want, etc. These are the verbs that either take gerund with them or infinitive with them. That means infinitive means what I have yesterday told you, 2 plus verb की first form.
लाइक आई लव हेल्पिंग अदर्स। यहाँ पर लव क्या है, आपकी एक वर्ब है जिसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं जिरेंड को भी, दैट इज़ हेल्प फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और ये वर्क करना चाहिए नाउन की तरह भी। और दूसरा है आई लव टू हेल्प अदर्स। यहाँ पर टू हेल्प एक इन्फिनेटिव की तरह वर्क कर रहा है स्टूडेंट्स, तो इन बोथ केस यू कैन यूज़। ओके, सेकेंड वन इज़ बट दीज वर्ब कैन टेक ओनली जिरेंड्स आफ्टर दैम। ये जो वर्ब जो अब मैं बताने जा रही हूँ ये सिर्फ अपने साथ जिरेंड्स लेती है, नो इन्फिनेटिव। अवॉइड, डिटेस्ट, enjoy, forgive, deny, postpone, forgive, understand, these verbs. लाइक यू मस्ट अवॉइड स्मोकिंग। यहाँ अवॉइड क्या है, एक वर्ब है, इसके बाद सिर्फ जिरंड आएगा। यू कांट यूज इन्फिनेटिव विद इट, लाइक यू कांट से यू मस्ट अवॉइड टू स्मोक, नो, you can only use gerund with it, you must avoid smoking. Now let's discuss the third point, which is the infinitive is changed into a gerund governed by a preposition after the verb abstain, despair, hinder, prevent, refrain, prohibit and think. Again read, infinitive is changed into a gerund. यहाँ पर infinitive को change कर दिया जाता है किसमें, gerund में, जो govern हो रहा है, जो किसके बाद आ रहा है, prepositions के बाद. Okay, she thinks of going abroad. ओके, हियर इन दिस यू कुड से दैट कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जैसे शी थिंक्स ऑफ गोइंग अब्रॉड, या यहाँ पर आप सेकेंड सेंटेंस में देखिए द वीक मैन डेस्पेयर ऑफ सक्सीडिंग. डेस्पेयर इज़ अ वर्ड जहाँ पर विद दैट वर्ब यू कैन यूज़ जिरंड, नॉट योर इन्फिनेटिव. ओके, टू सक्सीड नहीं बोल सकते हैं आप. फोर्थ वन इज़ द एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन with a preposition must be followed by a gerund. If in sentence, if you could see adjectives and verbs both are used in combination, then with a preposition as well, then with that gerund will come. Like our team aimed at winning the match. Here what you have seen, preposition at is there. Okay, yes, the adjectives and verbs are being used here. Okay, so therefore with that you have to use what, your gerund. Now the gerund and the present participle. The gerund and the present participle end in ing. We definitely know both the present participle is also ending in ing, whereas gerund as well. The gerund is used like a noun. What is the basic difference between two students? Gerund we are using like a noun, but present participle is always used as an adjective. Do remember that. How? Walking is a good exercise. Walking on the lawn, I found a coin. See, here in both the sentences, walking, walking is written. How could you identify? In first sentences, walking is a noun. Walking is your noun. Because it is being told for the exercise that क्या बोला जा रहा है? Walking, टहलना क्या है? एक अच्छी एक्सरसाइज है, टहलना. जब आप आई एम टेलिंग यू वन ट्रिक, जब आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो द वर्ड्स विच आर एंडिंग विद योर ना, टहलना, स्मोकिंग करना या धूम्रपान करना, ओके, विद दीज वर्ड्स अगर आपकी ये ना करके एंड हो रहे हो तो आप इसको जिरंड मानेंगे. ओके, तो वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छी एक्सरसाइज है. यहाँ पर वॉकिंग आपका नाउन है, बट इन द नेक्स्ट सेंटेंस वॉकिंग ऑन द लॉन, आई फाउंड अ कॉइन, कहाँ पर चलते हुए, लॉन पे, तो वॉकिंग ऑन द लॉन ये एक एडजेक्टिव है वॉकिंग यहाँ पर, बिकॉज इट इज़ बीइंग क्वालिफाइंग योर लॉन, कि कहाँ पर चल रहे हो आप, लॉन में चल रहे हो. ओके, hope so the video is clear to you. Try to solve the exercise. I will also provide you on your class WhatsApp group. Thank you students, to watch it to understand the chapter.